ओके, बहुत जल्दी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के एक पॉलिटिशियन खुद ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि उनको हेल्थ डिपार्टमेंट से एक ऐसा लेटर आया था, 7 पन्ने का लेटर आया था। वो लेटर भी दिखा दूंगा, प्रूफ दिखा दूंगा। उस लेटर में ये लिखा है कि कैसे अगर कोई इंसान किसी भी कारण से मारा जाए और उस इंसान ने अगर कोविड-19 का टेस्ट नहीं कराया हो, लेकिन फिर भी अगर वो इंसान मारा जाए तो उसका रिपोर्ट में ऐसा लिख देना है, उसके डेथ सर्टिफिकेट में ऐसे लिख देना है कि ये इंसान कोविड-19 से मारा गया। भले ही उस इंसान ने कोविड-19 के लिए टेस्ट कराया भी ना हो, लेकिन वो इंसान अगर मारा जाए तो उसके डेथ सर्टिफिकेट में ऐसे लिख देना है कि वो इंसान कोविड-19 से मारा गया। आप अपने आंखों से ये वीडियो देखो। A Minnesota state senator says officials are asking doctors to fill out death certificates with diagnosis of COVID-19, whether the person died of it or not. Valley News Team's Callie Hubbard talked to the lawmaker today, who says fear may be coming into play. Minnesota Senator and Dr. Scott Jensen says he received a 7-page document from the Minnesota Department of Health on how doctors should go about filling out a cause of death certificate. The letter from the Minnesota Department of Health gives advice to physicians, physician assistants, and others who certify deaths. The doctor says the letter takes you to a CDC website that has recommendations on how to include COVID-19 as a diagnosis for someone who has never tested for COVID-19. Say I have a nursing home patient who's frail and 88 years old and comes down with a cough and a fever, and after 3 days ends up passing away from pneumonia. I'm not going to put influenza on that death certificate. So I doubt that I would be inclined to put COVID-19. Dr. Jensen says each state's reported death numbers are making a lot of people fearful, adding that getting the number right is critical, especially during a pandemic. I worry that sometimes we're so darn interested in just jazzing up the fear factor that sometimes people's ability to think for themselves is paralyzed if they're frightened enough. One of the scenarios listed under the CDC guidance for certifying deaths due to coronavirus says, although no testing was done, the coroner determined that the likely underlying cause of death was COVID-19 given the patient's symptoms and exposure to an infected individual. So is the Minnesota state data reliable? I don't think I have any position to question that per se. I know that I have talked with nursing staff who have been involved with people who have passed away that had either living wills or were on hospice care. In some of those situations, I've been led to believe that there may have been a COVID-19 diagnosis included on the death certificate document without having had a COVID-19 confirmed laboratory test, but I don't have any way to confirm that myself. He says the public isn't stupid, and if you start messing with numbers, you're going to wish you didn't. In the FM area, Callie Hubbard, Valley News. I think is critically important. Can you repeat what you just said, please? Well, last Friday, I received a 7-page document that sort of told me that if I had an 86-year-old patient that had pneumonia but was never tested for COVID-19, but sometime after she came down with pneumonia, we learned that she had been exposed to her son who had no symptoms, but later on was identified with COVID-19, that it would be appropriate to diagnose on the death certificate COVID-19. Now, we've not done that. If someone has the pneumonia after and it's in the middle of a flu epidemic, and I don't have a test on influenza, I don't diagnose influenza on the death certificate. I will say this elderly patient died of pneumonia. I don't mean to interrupt you, but my heart is sinking right now as you're telling me this. You're a doctor. Why in the world would they be sending you out information to fill out death certificates, whether the person's been diagnosed with COVID-19 or not, but then to say in the death certificate this person's death was caused by COVID-19? That does not sound right to me. I went to the person in our office who does most of the death certificates over the last 10, 20 years, and I said, does this sound right? I had her look at the documents that I printed off, and she said, well, we've always been told that you always put down just facts. You don't put down any probabilities. You don't put any presumptions down. It's just what you know. And so this is concerning, and it actually gets to your point, Chris. When we start talking about the data that goes into the modeling, we have to ask ourselves a question. Are we being forthright? Are we sharing with the public? Minnesota, North Dakota,
we don't need to be having it sugar-coated. We want to know what's going into your modeling. So with that being said, why would they want to skew the number of deaths due to COVID-19? Well, fear is a great way to control people, and fear is a great way to control people, and fear is a great way to control people, and I worry about that. I worry that sometimes we're so darn interested in just jazzing up the fear factor. तो जिस लेटर के बारे में बात कर रही है इस वीडियो में, उस लेटर का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक क्लिक करना। आपको वो लेटर, वो प्रूफ जो ऐसा प्रूव कर रहा है कि जितने भी कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं वो सब एक अजम्पशंस पे बेस्ड है। कैसे ज़बरदस्ती इनको कोविड-19 प्लस कोविड-19 पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया जा रहा है पेशेंट्स को। जो इंसान कोविड-19 से मारा भी नहीं गया उसको भी कोविड-19 की वजह से मारा गया, ऐसा रिपोर्ट्स और डेथ सर्टिफिकेट में लिख दे रहे हैं। तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि जो न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में जो पोस्ट वायरल्स हो रहे हैं कि इतने लोग मारे गए, ये डॉक्टर मारा गया, वो हो गया, इधर हो गया, इतने हज़ार लोग मारे गए, इतने हज़ार लोग इन्फेक्टेड है, ये कितना सच है या कितना झूठ है? ये सब अजम्पशंस पे बेस्ड है। इसीलिए मैं बहुत पहले से आपको बताते आ रहा हूँ कि कैसे कोविड-19 के जितने भी केसेस आपको स्पेशली न्यूज़ चैनल्स में दिखा रहे सब फेक है, क्योंकि सब अजम्पशंस पे बेस्ड है। और बहुत सारे प्रूफ्स तो मैंने अपने पुराने वीडियो में दे रखा है, तो आप जाके वो सब देखो। और बहुत जल्दी आ रहे हैं वीडियोस, और 5G के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है कि कैसे सबको लॉकडाउन में रख के दुनिया भर में ये 5G सिस्टम्स इनेबल करते आए हैं। वो 5G सिस्टम जिसका अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया कि इंसानी दिमाग पे, इंसानी बॉडी पे, इंसान की इमोशनल लेवल पे कैसे 5G रेडिएशन इफेक्ट करता है, ये टेस्ट आज तक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी 5G सिस्टम दुनिया भर में इनेबल होते आ रहे हैं। दुनिया भर में लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि 5G क्यों लगा रहे हैं, 5G क्यों लगा रहे हैं। You just admitted that you're laying 5G, so that's basically why we're all inside, why you've got free reign of London, no? Everybody's on 5G. Well, everyone will be dead, so who's going to be playing on the internet and who's going to be on their PlayStations? We'll all be in hospital with on breathing apparatus. और नाटक क्या दे रहे, 5G लगा रहे, ऊपर से कह रहे कि ये फाइबर ऑप्टिक है। So what are you laying? Fiber. Fiber. What kind of fiber? Fiber optic 5G ones. फाइबर ऑप्टिक केबल लगा रहे। अब मैं तो बता रहा हूँ इंडिया में भी लग रहा होगा, मैं नहीं जानता। मैं आपको सारा प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, जिस दिन 5G इनेबल हो गया ना, सारा इंसानियत ख़त्म हो जाएगा। ये बात मैंने दूसरी बार कहा है और ये बात सच है। एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि कैसे कोविड-19 के अगेंस्ट और कोविड-19 के लिए जितने भी केसेस आ रहे, जितने भी केसेस न्यूज़ चैनल्स में दिखा रहे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे, ये सब अजम्पशंस पे बेस्ड है। और इस चीज़ को बिल्कुल ना माने, क्योंकि जितना ज़्यादा दिखाएंगे लोग उतना ही ज़्यादा, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करोगे वो लोग बताएंगे कि कोरोना वायरस या कोविड-19 कितना डेंजर है, कोविड-19 कितना डेंजर है। उससे भी आप डरोगे, आपका इम्यून सिस्टम और वीक होगा और आप और जल्दी इस बीमारी से ससेप्टेबल रहोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मेरे पुराने वीडियोस जाके देखो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे कोरोना वायरस कोविड-19 एक फेक कोविड-19 है। फेक कोविड-19 के नाम पे दुनिया भर की इकोनॉमी को क्रैश कर रहे हैं, करोड़ों लाखों लोगों का जॉब खतरे में है। क्वारंटीन मत कहना इसको, मैं तो इसको क्वारंटीन नहीं कहता। सबको हाउस अरेस्ट में रख दिया है और कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन और एक्सटेंड करेंगे। एक ऐसे वायरस के बेसिस पे मैंने अपने चैनल के डिस्कशन या कम्युनिटी पेज पे एक वीडियो डाला है, वो जाके देख लेना कि कैसे कोविड-19 का अभी तक किसी साइंटिस्ट ने कंफर्म नहीं किया कि कोविड-19 है भी या नहीं, लेकिन इसके ऊपर वैक्सीन्स बन रहे हैं। एक ऐसा वायरस जो एक्सिस्ट भी नहीं करता, उसके ऊपर वैक्सीन्स बन रहे हैं। अब मुझे बताना है कितना बड़ा झोल चल रहा है इस दुनिया में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बस उतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता।